Hello students, welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing your grade 10 biology के 40 important competency based questions. So basically as your board exams are near, very near in short for science. So today हम biology के as you know there are four chapters. So चारों chapters है 10 important questions so we are going to do today. So before starting make sure to like this video, share to your friends and subscribe करो channel को immediately to ace your board exams. So let us start. Basically, as you guys know already, कि आपका क्या syllabus है, I need not remind you. So we already know that what all chapters we have. We have our four chapters that are life processes, control coordination, how the organism reproduce, and heredity and evolution. ये चार chapters है, तो हम life processes से start करते हैं questions करना. Okay. So question number one on your screens now. So the process of filtering blood outside the human body to remove harmful waste is called as dialysis. Correct? Dialysis बोलते हैं हमको पता है ये. डायलिसिस टेक्स प्लेस इन द एनक्लोज चैम्बर है कि एनक्लोज चैम्बर में क्या होता है फर्स्ट इधर एंट्रेंस पे वेस्ट ब्लड एंटर करते हैं उसके बाद एक यूज डायलिसिस सोल्यूशन होता है इस ब्लड में एक हॉलो पाइप से ब्लड फ्लो कर रहा होता है फिर एक फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन भेजा जाता है प्योरीफाई ब्लड फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस हमको दिखाया है अब क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन says that which of the following must be true for a dialysis chamber? आपको थ्री स्टेटमेंट्स दी गई है अब आपको बताना है कि डायलिसिस चेम्बर के लिए इनमें से क्या ट्रू है यस और नो के फॉर्म में ओके यूज डायलिसिस सॉल्यूशन इज रिसाइकल्ड बैक टू द चेम्बर एज फ्रेश नहीं जो यूज डायलिसिस में ऑलरेडी वेस्ट होता है तो ये वी कैनॉट रीयूज इट सो आंसर इज नो सेकंड क्वेश्चन hollow pipe should have semi permeable walls वो pipes hollow है उसमें blood flow हो रहा है with the waste blood और बाहर से जो dialysis solution है उसको enter करना है तो अगर semi permeable होगा तो it will be more easy so yes next blood pressure inside the hollow pipe should be higher than that inside the human one let us say these are my hollow pipes correct और ये हमारी ह्यूमन बॉडी है करेक्ट अब अगर इसमें प्रेशर ज्यादा होगा इसमें प्रेशर कम होगा सो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा करेक्ट वी कैन से दैट इट कैन बी मूव ऑस्मोसिस के थ्रू वी कैन से लाइक दैट एग्जांपल के तौर पे सो आंसर विल बी व्हाट आंसर विल बी यस ओके let's go to question number two. What type of blood vessels bring in the blood with waste? जो waste होता है वो कौन सा blood vessel? We have arteries, capillaries and veins. ठीक है arteries तो oxygenated वो blood लाती है capillaries diffusion करती है तो बचा क्या? We have the veins. So veins are the blood vessels which bring the bloods with waste. Now, next one. Which organ acts like a natural dialysis chamber? Excretion. Excretion takes place in which part of the body? We know वो किधर होता है किडनी में. So जहाँ पे किडनी है वहां पे ही natural dialysis होता है. ठीक है natural the process of dialysis takes place in the kidneys only. अब देखो next. Sanjeev wanted to check whether plant leaves release water vapor. He took a potted plant, covered it with plastic bag. अब देखो क्या हुआ कि start of the activity cover किया उसके बाद water droplets है. अब we know क्यों है ये water droplets? We all know the reason due to transpiration. Correct? ट्रांसपिरेशन की वजह से देयर वर प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स करेक्ट अब संजीव कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटी न्यू पॉट बस कंफर्म करने के लिए कि सही है कि नहीं है कि मैं ही गलत हूँ सो टू कंफर्म इस फाइंडिंग कौन सा जो होगा बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा न्यू पॉट को सो व्हाट कैन यू सी ओवर योर सी वी कैन सी दैट पहले वाले में क्या है हमारे पास वी हैव दी लीव्स है अगर लीव्स होंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा तो इफ यू सी इन बी लीव्स नहीं है तो लीव्स नहीं है तो वाटर वेपर्स नहीं आ रहे इसका मतलब है जहां पे लीव्स विल बी देयर वाटर वेपर्स विल आल्सो कम वाटर ड्रॉपलेट्स विल आल्सो कम so hence to confirm हम डी वाला सिस्टम लेंगे okay next one how does the loss of water by plant leaves help in the plant अब वाटर लॉस होता है तो क्या उसमें दो पॉइंट्स लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट will be it helps after loss of water it helps to
absorb two major things, that is water and minerals from the root. ठीक है? और second, for second is to control the temperature of the plant. So plant body का temperature control करने के लिए और water मिनरल्स को absorb करने के लिए loss of water is necessary. अब देखो नेक्स्ट आपको एक और डायग्राम दिया गया है. व्हाट डज इट टेल्स अबाउट द ब्लड ट्रांसपोर्ट. ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कोल्ड एंड इन बिटवीन ब्लड एंड इनहेल्ड एयर दैट टेक्स बिटवीन द कैपिलरीज. और ये इसमें आपको पूरा डायग्राम दिखाया गया है. करेक्ट. अब क्वेश्चन कहता है which which statement supported by the diagram. We can see that वो लोग क्या किस चीज के बारे में बोल रहे हैं हमको. वो बोल रहे हैं कि exchange of gases between blood and inhaled as taken through the capillaries. तो हमको सीधा सीधा पता है, हमको कैपिलरीज के बारे में बता रहे हैं, राइट. सो कैपिलरीज आर permeable to gases. That is the main idea of the diagram. Next question. Which of these will be the immediate effect if gaseous exchange in lung capillaries reduce? अब देखो lungs में if the gaseous exchange gases अंदर बाहर आना कम हो जाए, करेक्ट, तो क्या होगा, what will happen, जो gases exchange होगा उससे जो oxygenated blood होता है, करेक्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज फॉर्म. अब अगर ये ही नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी को वो ब्लड मिलेगा जिसमें लेस ऑक्सीजन है. सो हेंस पल्मोनरी वेन्स विल रिसीव ब्लड विद लेस ऑक्सीजन इज द आंसर. अभी नेक्स्ट वन ये देखो, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपका. विच आर द फॉलोइंग लेबल पार्ट्स रिप्रेजेंट द लिवर. आपको एलिमेंट्री कैनाल का दिया गया 1 2 3 4. पहला हमको दिख रहा है ये डायरेक्टली यू कैन सी दिस इज योर लिवर. करेक्ट. दिस इज द लिवर. सो फर्स्ट आंसर है. दूसरे क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग एक बार. सेकेंड वन इज योर स्टमक. करेक्ट. पैंक्रियाज आपको दिया गया है. थर्ड वन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. करेक्ट. intestine, and last one fourth is your large intestine. Correct. So liver कौन सा वाला है, first one. Next question देखो. Next question states that pancreas secretes lipase enzyme. Mr. Ayub is suffering from malfunctioning of the pancreas. Which of the following will be pancreas क्या produce करता है, lipase. Lipase is produced by the पैंक्रियास. अब लिपेज क्या है, हम ऐसे याद रख सकते हो कि लिपेज किसको डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स को. लिपिड्स आर नथिंग बट फैट्स. So that means digestion of fats will be adversely affected. Okay, so that is your answer. 10th question. Smoking is likely to cause infection in the respiratory tract, which it may explain a bit now. Respiratory tract की बात करें, so let's say that we have our trachea. Correct. Trachea is a part of respiratory tract. Trachea windpipe में हमारे पास small hair-like structure है which we call it as cilia. उनको cilia बोला जाता है. अब when people smoke, it destroys this hair-like structure known as cilia. ठीक है, वो destroy कर देता है और when वो destroy कर देता है तो all dust, foreign particles can easily go through and damage the lungs. Okay. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन देखो, अभी एक पिक्चर दिया गया है. द मूवमेंट ऑफ प्लांट हार्मोन ऑक्सिन इन अ सेल रेगुलेट्स सेल एलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर, ऐसे इधर ऐसे जा रहे हैं वो. करेक्ट. नाउ what would be size of cell and distribution of auxin at the part. Auxin regulates cell elongation and growth of plants, है ना. सेल को elongate करते हैं, राइट. तो सेल कैसे elongate होंगे, when oxygen is present in them, so answer will be option number B. Now next question. How can the movement of stem in a particular direction be described? तो अगर आपको देखना है, like we have the tropic movements and everything, correct. तो आप कैसे बोल सकते हैं, against the gravity. टच या केमिकल से नहीं होता, it is through the gravity. Cell division. Now, we know that there are many phases like anaphase, then there is many more phases like that. Similar in cell division, there is one phase of cell division that is known as
Cytokinesis. Cytokinesis is the phase when the microfibrils and everything break up. Okay, so that is done in the presence of cytokinins. Okay, so cytokinins is promoting your cell division. Next question. You have to choose कि reflex arc का correct sequence क्या है. Let us say कि आपके पास एक pot है. Correct, this is your pot. Alright. ये pot, this pot is hot. The pot is hot. If you touch it, तो आप क्या कर रहे हो? पहले वो hotness को receive कर रहे हो, the stimuli को receive कर रहे हो, correct, आपका receptor कर रहा है, correct. So if you look कौन से option में receptor दिया गया है, we can see सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जिसमें रिसेप्टर दिया गया है सबसे पहले. सो यस दैट विल बी द आंसर बिकॉज रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, रिले, मोटर और फिर इफेक्टर. सिंपल राइट. सेंसरी ही रिसेप्टर तो सबसे पहला होगा रिफ्लेक्स आर्क में. सो और किसी में दिया ही नहीं है. सो बी इज योर आंसर. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये भी वही है. द फिगर शोज द रिफ्लेक्स आर्क. देखो रिसेप्टर है, इफेक्टर, सेंसरी, रिले और मोटर. करेक्ट. अब देखो What is labeled as X? अब देखो एंड में जाके हमारे पास एक X है. अभी रिफ्लेक्स आर्क इज अ स्मॉल एक्टिविटी. सेरिब्रम, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस सब ब्रेन में कनेक्ट है. ब्रेन ज्यादा ज्यादा बिग कामों के लिए होता है और जो सादे मादे काम होते हैं छोटे मोटे, दैट इज डन बाय योर स्पाइनल कॉर्ड. सो X हियर इज स्पाइनल कॉर्ड. ओके. नाउ अब देखो यू हैव बीन गिवन अ ग्राफ ओवर हियर. ठीक है, ग्राफ है. द ग्राफ shows the average height of boys and girls in a population from age 4 to 20. Now we have to say which, what does the graph actually indicate, that we have to say over here. Okay, average of boys is always written, नहीं कभी कम है कभी दे दिया, like if you see over here, right. Average height of girls is greater than that of boys in adulthood. नहीं वो भी नहीं कह सकते हम लोग अब without accurate things. Average of height of girls during puberty is greater than that of the boys. Average height of girls during puberty, like if you look over your 12 age पे जो puberty का start होता है, right? Girls have more height than boys. So yes, we can say that C is the right answer. Okay. Question number 7 of control coordination. A student just suggested a different title for the paragraph, height of boys and girls from birth to adulthood. Is the title correct? Explain. Answer to this question is no. Why no? Because here they have written birth. Birth मतलब 0 years होता है वो. 0 years. But क्या आपको इधर 0 years दिख रहा है? It is starting from 4. So as the age is from how much years? Age is starting from 4 years. We cannot say that it's from birth. Okay, so that is why it is incorrect. Question number 8, again एक yes and no वाला question है. Hormones are released into the bloodstream. Yes, वो correct है. Ductless होते हैं, so इसलिए directly हो जाते हैं. Next one. Endocrine is use electrical impulse. नहीं वो impulses use नहीं करते. They do not need impulses. वो किसमें से as soon as you hit puberty and all the same endocrine glands are like adrenal, वो सब act करते हैं. And sex hormones regulate changes associated with puberty. Yes, that is associated with puberty itself. Next one, cerebellum in the brain. Brain की बात कर रहे हैं हम लोग. It controls the voluntary actions. Voluntary means in our will, correct? In our will. Okay, जो हमको करना है. So which is controlled by cerebellum? Beating of heart, that is rhythm है. Cardiac muscles करते हैं. We do not control it. Blinking of eyes, आप eyes blink करना कभी भूल थोड़ी ना जाते हो. Watering or salivation of the mouth, that is also involuntary. But jumping from a height, अब कभी भी height देखते हो ना jump मार देते हो. That is an our को कब jump मारना है. Correct? So that is a voluntary action controlled by the cerebellum. Last question is, which of these health conditions is caused by a hormonal imbalance? Scurvy. When I talk about it is due to deficiency, correct? Vitamin, like nutrient deficiency, can I say? Typhoid is a viral, not viral, sorry, bacterial, correct? Bacterial disease, a viral bacterial, right? Diabetes mellitus, as you know, एक hormonal imbalance होता है due to insulin, correct? Insulin glucose का level imbalance होता है. Common cold is viral. So hormonal
डिसबैलेंस इम्बैलेंस कौन सा होता है? डायबिटीज का। So within like 15 minutes we have completed the first two chapters. 20 questions हो गए हमारे, remaining 20 from how do organisms reproduce, and we have from our heredity. So let us start with the next part. From how do organisms reproduce? Diagram shows four different population of a freshwater species. All fish belong to the same species but different adaptations. Let us हमको इनको नाम दे देते हैं. Let's say this is A, this is B. Light color वाली A है, dark color वाली B है. अब A fish फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों में रह सकती है, बट 25 डिग्री के ऊपर वो सरवाइव नहीं कर सकते. दे कैन नॉट टॉलरेट. फिश बी, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रह सकते हैं और 35 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर को सरवाइव कर सकते हैं. अब क्वेश्चन इज विच पॉपुलेशन इज मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव अ स्मॉल इंक्रीज इन वाटर सैलिनिटी. ठीक है, अगर हल्का सा भी थोड़ा सलाइन हो गया वाटर इन द हैबिटेट, विच पॉपुलेशन विल सर्वाइव. अब देखो, पॉपुलेशन विद फिश वन, सॉरी ए, जब जो लाइट कलर फिश है अगर वही सारी हुई तो वो सरवाइव कर पाएंगी, क्योंकि सारी ए फिशेस जो है वो सलाइन में कर सकते हैं. अब वो कौन सी है? पॉपुलेशन टू में. पॉपुलेशन टू में यू कैन सी दैट ऑल आर ए ओनली. सो यस, दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, yes or no? Which of these is responsible for the difference in adaptation within the fish species? A circle, yes or no? Difference in food source अलग होगा तो इस वजह से वो adapt ज्यादा करिए. नहीं, that's not a reason. Variations in DNA, yes, that is the reason. उनका DNA अलग है, although from the same species, इस वजह से they are adapted different. और age का तो इधर कुछ भी रिलेशन नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखो, फिश विद डिफरेंट एडेप्टेशंस आर पुट इनटू टू सेपरेट टैंक्स. हमारी ए फिशेस ए टैंक में, बी फिशेस दूसरे टैंक में. अब क्या हुआ? इन द वाटर बोथ द टैंक्स आर सलाइन और मेंटेन एट 35 डिग्री सेल्सियस. दोनों सलाइन हो गए, दोनों 35 हो गए. हाउ विच टैंक विल द फिशेस सर्वाइव? अब देखो, फर्स्ट वन, टैंक की जो फिशेस है वी नो दैट वो लोग सलाइन वाटर को सलाइनिटी में रह सकते हैं. ओके, बट उनका जो मैक्स टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है. करेक्ट. ये तो 35 है, तो 35 डिग्री सेल्सियस उनको चलेगा नहीं. सो दे विल डाई. नेक्स्ट पे चलते हैं. बी में देखते हैं. बी में द डार्क कलर्ड फिशेस वो 35 डिग्री सेल्सियस को झेल सकते हैं, सो दे कैन टॉलरेट. बट saline water, salinity उनको नहीं चलती, so hence they will also die. So that means no fishes will survive. No fishes will survive. क्यों नहीं सर्वाइव करेंगे? बिकॉज यू कैन एक्सप्लेन की ए में क्या प्रॉब्लम है? टेम्परेचर. बी में क्या प्रॉब्लम है? सैलिनिटी. ओके, दैट इज द रीजन. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Medha cut a celery plant into two pieces. She placed the lower part of the cut celery into a jar of water. After a few weeks, what happened? There were new leaves and stems. हम क्या बोल सकते हैं? ये what is this? This is nothing but your vegetative propagation. Correct? This is your vegetative propagation through which you can say that क्या हो रहा है इधर? और we can say कि वेजिटेबल प्रोपगेशन के थ्रू जो पार्ट्स है वो वापस जनरेट हो रहे हैं. राइट. सो सम प्लांट्स कैन रीजेनरेट लाइक celery. ठीक है, इवन रोज, लाइक यू नो ग्राफ्टिंग एंड ऑल वी डू. करेक्ट, लाइक दैट. Next question. Question number 5. Scientists grew new plants from a group of cells. Scientists grew new plants from a group of cells in the laboratories. What is this technique known as? कोई कोई क्या होता है कि they take a cell, a tissue from a plant and they put it in the other plant. Okay, like they put it in the other plant and then they make a new variety. Okay, so ये technique को हम बोलते हैं tissue culture. This is known as the tissue culture. So you can write a little bit about it and you will get the marks. Next question. Few secondary characters are given in growth of thick hair, cracking of voice, and development of breast in female. Now, at which stage of human development study we have studied that these secondary characters are appeared in humans during the period of adolescence or puberty. So during this, these changes are
occurring. Okay. Now, question number 7. Again, yes or no? Characteristics generally develop older in girls than boys. Girls में जल्दी होता है. Yes, that is true if you check the ages. Yes. The character develop over a span of few years, huh? After some time, like at the age of 12, 13, 14, during this time, puberty hits. Characters that last for a short time. This is absolutely long. These characteristics after puberty are lifelong. They do not stay for a short time. After a short time, it will go back. No, it is for long. Okay. Next, question number 8. Plants produce a vegetative propagation are genetically identical to the parents. What could be the biggest disadvantage? Vegetative propagation, when I say, वो जो plants होते हैं vegetatively propagated, उनका genetics and looking same होता है as the parent. So क्या कह सकते हैं हम लोग? The reason can be, first of all, जो vegetatively propagated as they have single parent एवं asexual mode of reproduction है, so that is why they have a short lifespan. They are short-lived. Okay, they are short-lived. Second वाला, second thing is that as I said that वो same होता है to the parents, so no variety, new varieties can be produced. ठीक है, अगर लेट्स से क्या होगा कि कोई दूसरा टाइप का है विद टू पेरेंट्स तो न्यू वैरायटीज हो सकती है, बट एक ही पेरेंट्स है, लाइक द सैलरी वाला एग्जांपल, करेक्ट, सैलरी वाला एग्जांपल था ना, वो जैसा पेरेंट सैलरी था वैसे ही जो ऑफस्प्रिंग है वो भी होगा, करेक्ट, so that is why no new varieties are present. So these are the disadvantages. Next one. A farmer bought some strawberries. He liked the taste. He decided to grow his own strawberry, but they should have the same taste. अब देखो, फार्मर ने एक स्ट्रॉबेरी खाई, उसने बोला अरे वाह क्या स्ट्रॉबेरी है, मुझे तो ये ही स्ट्रॉबेरी चाहिए अपने भी फार्म में, पर उनका सेम टेस्ट होना चाहिए. अब क्या कर सकते हैं? Which method of the cultivation should he use and why? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अप्लाई करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमने जस्ट अभी पढ़ा, जस्ट हमने पढ़ा कि क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जेनेटिक लाइन, हमको टेस्ट किधर से आएगा स्ट्रॉबेरी का, थ्रू जेनेटिक्स, सो दैट मीन्स वी कैन अडॉप्ट द मेथड ऑफ वेजिटेटिव propagation. So through vegetative propagation क्या होगा? Then we can produce strawberries of the same taste. Now, why would the farmer use this method? क्यों यूज करना चाहेंगे वो? क्योंकि हमको जो traits चाहिए, we need to conserve the traits. So conserved traits, जो taste रहेगा वो दोनों में same रहेगा. So that's why vegetative propagation is used. Last question, that is, what could be the two most likely reasons for unicellular organisms to reproduce only through asexual mode? Two most likely unicellular organisms क्या होते हैं, like amoeba, paramecium, then we have hydra. All of this, क्यों वो लोग through asexual? Why only one parent is involved in this? There are two reasons. First reason is that they can produce large number of offspring. Correct? They can produce a large number of offsprings. So large number of offsprings can be produced. And secondly, the reason is that they can survive in identical environment, right? The second thing is survival. Correct? अब देखो, let's say example देखते हैं. Let's say this is my amoeba. Okay, rough diagram है. Okay, this is my amoeba. Wait, I'll draw a good one. देखो. Let's say that this is our amoeba. ठीक है, अमीबा लेट्स से वो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर लेट्स से वो 50 डिग्रीज में सरवाइव कर सकता है. ओके, सो द व्हेन इट विल बी बाइनरी फ्यूजन होगा, सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू अमीबास. करेक्ट, फर्स्ट अमीबा एंड सेकंड अमीबा. सो ये दोनों अमीबास भी जो होंगे, ये दोनों भी क्या करेंगे, दे कैन सर्वाइव इन 50 डिग्री सेल्सियस. सो दैट मीन्स सेम एनवायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकते. दैट्स द टू मोस्ट लाइकली रीजंस. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पे चलते हैं. लास्ट पार्ट पे रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं. So, a plant with red flower RW is crossbred with a plant with white flower WW. Two variations of the gene are there. So, the gene for red flowers R is dominant. ये दिया गया कि dominant है over the white flower W. अब एक Punnett square दिया उन्होंने RW RW WW WW.
ये दिया गया है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। Question says, what percentage of plants is likely to produce white flowers? So, what can be the main reason? See, क्या है हमारा पास? We have RW, then we have WW, right? As per the Punnett square. इतना दिया गया है। हमारे टोटल कितने हैं? चार है। चार में से दो RW, दो WW, so obviously 50-50 चांसेस है। या तो वो 50%, 50 होगा, या तो वो व्हाइट होगा, या तो वो फिर रेड ही होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट वन। A red flower RR is crossbred with white flower WW. What will be the color of flower? अब देखो RR और WW they both are crossbred. Crossbreed हुआ तो कौन सा कलर होगा? It is given in the passage कि red जो R है हमारा that is dominant. Correct, that is dominant. As that is dominant, so red ही होगा। आगे का जनरेशन के plants will also be red. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कुड हैव कॉज्ड द वेरिएशन इन द जीन फॉर द फ्लावर कलर? जीन्स में जो वेरिएशन है कलर का, व्हाई विल इट बी? म्यूटेशन, पॉलिनेशन, स्पेसिएशन और एडेप्टेशन। ऑब्वियसली हम फ्लावर का कलर चेंज करें ड्यू टू क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग विल बी व्हाई? क्रॉस ब्रीडिंग विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। डीएनए म्यूटेट हुआ, चेंज हुआ ड्यू टू दैट रीजन। ओके, नाउ question number 4. The picture shows different layers of rocks with fossils. Okay, we have from place A, place 2, and there are layers given. Which layer contains the youngest fossil? Youngest fossil किसमें होगा? It will be, और देखो इसमें तो bricks आ रहा है। bricks youngest, और सबसे पुराना किसमें होगा? ऐसे मिट्टी पे। So मिट्टी सबसे इधर किधर है? layer 6 में। Correct? So hence layer 6 is your answer. Option number C. Next question देखते हैं। Which layers of rocks must have formed during the same time period? सेम टाइम पीरियड मतलब उनका, I'll give a trick how to do. सेम टाइम पीरियड मतलब उनका बैकग्राउंड भी सेम होगा, सेम थिंग्स विल बी फॉर्म, राइट? अब देख सकते हो लेयर 3 में क्या है, लेयर 9 में क्या है, सेम टाइम पीरियड पे वो फॉसिल्स बने होंगे। सिमिलरली और कौन सा, लेयर 4 और 10, फिर वी कैन से 1 एंड 8। ठीक है, तो 1 8 4 10 और 3 9 है। 4 10 नहीं है, 4 8 है, 1 6। ओके, तो हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास 3 9 है। सो लेयर 3 और 9 विल बी सेम इन द टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट देखो, एक एक्स लिंक्ड आपको इनहेरिटेंस दिखाई गई है इन अ फैमिली। टू वेरिएशंस है एक्स एंड एक्स। ट्रेट इज रिसेसिव और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कैरी टू कॉपीज। अब देखो मदर का कितना होगा? मदर विल ऑब्वियसली बी एक्स एक्स एंड फादर विल बी एक्स वाई। Correct. So XX and XY are the chromosomes required for the formation. So genotype क्या होगा? Genotype will be small xx and capital XY. So that will be the proper chromosome genotype of the parents. Okay. So six is the answer is B. All right. Now let's move towards the next option. I mean next question. Next question says that which of these traits is acquired by human population in response to environment? Doll height, brown eyes, and ये सब तो is due to DNA only, that's traits, and body mass is on our hands. Correct. Short hair is the trait which is acquired by human population to respond in the air, like when it's hot, when it's too cold, like that. ठीक है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो पिक्चर शोज टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, दो स्पीशीज जो अलग अलग जगह पे रहते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट जेनोटाइप ऑफ द मदर एंड फादर? दे कैन नॉट interbreed, cannot have similar shape, can live in different geographical areas, or they have mutations in their genes. Mutation हल्का सा फर्क दिख रहा है, correct? So they are two different species. So I guess the genotype will be they cannot interbreed, correct? So interbreed नहीं कर पाते। Ninth question देखो, we have to identify what is X. Two birds once belonged in the same species. The following sequence is likely to have caused origin of two different species. कुछ हुआ X, कुछ तो था वो हुआ, फिर नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जोग्राफिकल आइसोलेशन, और फिर एक न्यू स्पीशी बने। तो X क्या हो सकता है? दैट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर। ठीक है, एक्स क्या हो सकता है? देखो ऑब्वियसली कि नेचुरल सिलेक्शन है तो मतलब कुछ तो म्यूटेशन आया होगा, म्यूटेशन एज इन डीएनए में। सो देयर वुड बी सम चेंजेस इन द डीएनए ड्यू टू व्हिच देयर वाज नेचुरल सिलेक्शन और न्यू स्पीशीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यस और नो वाला।
Natural selection provides an advantage to organisms. Yes, new species बनती है, new prey and predators होते हैं. Genes mix with each other to produce nutrients. No, genes do not. हम DNA को mutate करते हैं chromosomes को and then we do it. All chromosomes in human cells are found in pairs. Again, that's a no. There are some type of chromosomes, autosomes, which are not found in pairs as well. So with this, students, we have completed with the today's session. Thank you so much for watching. This was a session one for revision क्योंकि अभी आपका पूरा syllabus this was only biology. So tomorrow we are coming up with doing the sample paper for in science. So जैसा हमने English में किया था वैसे we are going to discuss the science sample paper. Okay, tomorrow with physics, chemistry, and biology questions. So make sure to like this video, share with your friends, and subscribe to our channel. को bell icon को hit करो so that you get regular notifications. I'll be seeing you soon in our next video. Till then, take care, study well, and all the best.